So let's start with radiology PYQ series. And as the name suggests, we'll be covering all the important PYQs of radiology, right? So the aim is to cover PYQs of radiology, and I'll be covering PYQs from 2021 till 2025. ठीक है, the latest INI-CT which was happened, we will cover all important PYQs. अगर 2025 के नहीं है, I think 2024 तक के हैं. So that is fine. 2025 के you can just watch the recalls and you can get to know about the radiology questions. Everything is fine, Manish, Javed, Nitin, just give me a quick confirmation that everything is fine. Okay, so today is not going to be a theory class. हम थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. The main aim of today's class is to cover all important previous year questions from 2021 to 2024. And I think जो भी स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ लॉग इन किए हुए हैं, सबका यही एम है कि सर PYQs करा दो बस हमारे रेडियोलॉजी के. ठीक है, PYTs, टेस्ट एंड डिस्कशन, रैपिड रिवीजन, वन शॉट, BTR, मैराथन, सब हम बाद में कर लेंगे. बट लेट अस फर्स्ट सी व्हाट आर द PYQs which were asked. My voice is echoing in the background. What are the PYQs which were asked? I think it is fine. Is the voice still echoing? My voice is echoing. Manish, can you confirm if the voice echoing? Is everything fine? कोई दिक्कत आ रही है क्या ऑडियो में? मनीष एक बार कंफर्म कर दो. नितिन, ऑडियो में कोई दिक्कत है क्या? नो इको. आई थिंक जस्ट अ लैग ऑफ 5 to 6 के. सो लैग थोड़ा रहेगा. यस, लैग थोड़ा रहेगा. आपके एंड पर रहेगा. आई थिंक मेरा तो कनेक्शन सॉलिड है. सो एक बार अपना कनेक्शन चेक कर लो. बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन. वी आर गुड टू गो. Right, so today we'll be discussing all important previous year questions of radiology, and it will not be a theory session. Will not cover a lot of theory. Main aim is to tell you what are the important previous year questions, and you can yourself know what you have to study. ठीक है. इन PYQ से रिलेटेड जो थ्योरी है, PYTs जो होंगे वो हम कवर करेंगे अपनी INI-CET मैराथन में. Right, that will be covered in INI-CET marathon, which is from 1st November. Okay, 1st November to 6th November is our INI-CET marathon, and this is YouTube live. This is live on YouTube and for free. ठीक है, तो सब लोग देख सकते हैं ये INI-CET marathon. Will cover all 19 subjects in 6 days. Right, so let's say big subjects will be around 6 hours, short subjects will be 2.5 hours, that sort of thing. So that will cover the theory part. In today's session, we'll cover the PYQs of INI-CET for radiology start in the last 5 years. So let's first start with the first question. 60-year-old lady presented in a state of shock and abdominal distension with a history of peptic ulcer. ठीक है, पेप्टिक अल्सर है, शॉक है, abdominal distension है. X-ray is given below. What is the diagnosis? So tell me what do you think is the diagnosis? ठीक है, इजी क्वेश्चन है. दिस इज अ चेस्ट एक्सरे. एब्डोमिनल कंडीशन दे रखी है बट चेस्ट एक्सरे पूछा है. ठीक है, भले एब्डोमिनल कंडीशन. तो क्या आपको सोचना है? यू हैव टू थिंक ऑफ न्यूमो पेरिटोनियम. एंड व्हाट इज द sign of pneumoperitoneum given in this X-ray? You can see air under diaphragm. Air under diaphragm. Right? So this suggests a pneumoperitoneum, and in this case, she has a history of peptic ulcers. So my answer will be perforation peritonitis. ठीक है, air under diaphragm. So pneumoperitoneum का sign is air under diaphragm. What is the investigation of choice? If somebody asks you investigation of choice for pneumoperitoneum, it is not chest X-ray. It is NCCT abdomen.
right? All pneumothorax, pneumoperitoneum, pneumomediastinum, pneumocephalus, for everything we do a non-contrast CT. So investigation will be NCCT. Now what will be the management? Management will be exploratory laparotomy since the patient is in shock. Okay, so this is air under diaphragm. Now what are the common causes जिनके लिए आपको क्वेश्चन आएगा? So common causes are peptic ulcers. Another important cause is appendicitis. Appendicitis will also show air and perforated appendix, not appendicitis. Let me write perforated appendix. Perforated appendix. Another important cause is intestinal TB. Right? All these are important causes of pneumoperitoneum perforation, secondary to perforation. And for all sort of perforations, you have to do an expiratory laparotomy. And this is the next question, which was asked again in some other year, pertaining to management of perforation peritonitis. Okay, so that is how PYQs are important, because same thing will get repeated. So what is your takeaway? That intestinal perforation is a must know topic. ठीक है, intestinal perforation आपको अच्छे से पढ़ना है. So this was the question. A 55-year-old patient with a history of peptic ulcer disease have abdominal pain and distension for many days. It has worsened in the last 2 hours. His BP is 90/40. So patient is in shock, and there is guarding. X-ray is shown. What is the next step in management? So next step, she is in shock. She has perforation. So we will not do observation. There is no role of ultrasound abdomen because investigation of choice is non-contrast CT, and antibiotics alone are not sufficient. So you have to do a fluid resuscitation because she is in shock, and exploratory laparotomy to treat perforation. ठीक है सर? चलो next question. Most radiosensitive organ in the body is, what have you guys marked? Among the given options, what is the most radiosensitive organ? Now this is a very, very important topic. Radiosensitivity versus radioresistivity. ठीक है, हर बार अगर आपको कुछ एक चीज पढ़नी है जनरल रेडियोलॉजी से, यू हैव टू रीड दिस, रेडियोसेंसिटिविटी वर्सेस रेडियोरेसिस्टिविटी. एंड रेडियोसेंसिटिव ऑर्गन मोस्टली क्या होते हैं? गोनाड्स, बोन मैरो, endothelium, rapidly dividing cells, right? So इनमें क्या है? ब्रेन इज रेडियो रेजिस्टेंट, लंग्स रेडियो रेजिस्टेंट, स्प्लीन लेस रेडियो सेंसिटिव. सबसे ज्यादा सेंसिटिव है गोनाड्स विच आर ओवरीज इन दिस केस. ठीक है सर, अगर हम एक टेबल रिवाइज कर लें रेडियो सेंसिटिव रेडियो रेजिस्टेंट की, सेल साइकिल विच इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव phase of cell cycle, it is G to M junction, and if this is not given in the option, you have to mark M phase. रेडियो रेजिस्टेंट कौन सा सेल साइकिल फेज होता है? एस फेज. एस फेज इज रेडियो रेजिस्टेंट फेज. टिश्यू which is the radio sensitive tissue, it is bone marrow. Radio resistant is nervous tissue. Organ, if you're asked about radio sensitive organ, gonads. Radio resistant organ, vagina. And blood cell which is radio sensitive blood cell, these are leukocytes or WBCs, and radio resistant are platelets. ठीक है, so this is regarding your radio sensitivity and radio resistivity. Now next question, the following appearance as shown below is present in which of the following? What have you guys marked? So for Javed is asked, sir, for pneumoperitoneum, investigation of choice is CCT with contrast. So ideally
The investigation is NCCT with oral contrast. ठीक है, but most of the time a CCT is done to also see the cause of a pneumoperitoneum. So yes, you are right. In pneumoperitoneum, the important thing is that you have to give oral contrast. Oral contrast is very, very important because that will show the site of leak. However, in cases of perforated appendix, right, you cannot really see oral contrast because it sometimes does not go into the appendix also. Okay, so if you have to ask mark one thing, if both NCCT, let's say both NCCT and CCT are given in the option, then the answer will be CCT is better because it does not have any negative कुछ उसमें नुकसान नहीं है देने का. But in all of these cases, you have to give oral contrast. You have to give oral contrast. Chalo, next question. The following appearance shown below is present in. What have you guys marked? What have you guys marked? The following appearance is seen in. So what do you see? This is a chest X-ray. And what do you see? You first, you see number one, multiple lesions. They are multiple lesions. This is not a solitary lesion. They are multiple lesions. And they are very well defined, rounded. They are very well defined. And they are scattered bilaterally. And they are large. ठीक है, so they are typically large, मतलब they are masses and not nodules. Nodules छोटे छोटे होते हैं, less than 3 centimeter होती है नोड्यूल की डेफिनेशन. They are masses, appear bigger. ठीक है, so दो possibilities हैं, दो possibilities हैं इस केस में. Either it is infective or it is metastatic. Okay, Manish, you are saying bronchogenic CA? No. Bronchogenic CA usually solitary. एक सिंगल लीजन होगा, एंड अगर वो मेटास्टेसाइज कर देता है तो फिर मल्टीपल लीजन्स बनेंगे. बट at the outset, if the chest X-ray is asking you multiple well-defined lesions scattered bilaterally, this is either infective or metastatic. Now, infective typically has nodules, meaning small lesions. They're very small lesions. But यहाँ पर बड़े lesions हैं. तो answer here, a better answer here is metastasis. Better answer here becomes metastasis. Okay, so you see multiple lesions scattered bilaterally, and these are typically known as cannonball mets. They are cannonball mets. Okay. Now, which are the most common tumors to show cannonball metastasis? That is the most common primary site for lung mets. For lung mets is lung cancer. Lung cancer is the most common cancer in elderly males. So lung cancer is the most common primary site, followed by colorectal cancers, RCCs, pancreatic cancer, and breast cancer. Now, if you have a young male, in young male, the most common primary is testicular cancer. Manish is asking how to differentiate from fungal ball. So if it was a fungal ball क्या होता है? Aspergilloma. Fungal ball typically shows what? It shows an air crescent sign. And it is single, solitary होता है वो. तो उसकी कैसे एक्सरे होती थी? अगर ये लंग है हमारा, this is the cavity. Within the cavity, you see a lesion and उसके ऊपर आपको एक क्रीसेंट दिखता है, एयर स्पेस दिखती है ना. सो दिस इज योर फंगल बॉल.
अगर मल्टीपल बायलैटरल लार्ज लीजन स्कैटर्ड हैं तो मेट्स एक पॉसिबिलिटी और एक इन्फेक्टिव एटियोलॉजी है। बट टीबी के टिपिकल नोड्यूल्स छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। एंड टीबी का टिपिकल पैटर्न क्या होता है? दे आर सेंट्रीलोब्युलर नोड्यूल्स which are also known as tree in bud pattern, which show tree in bud pattern, and they are predominant in upper lobes. यहाँ पर तो bilateral all lobes involved है. So again metastasis is more favorable answer here than TB. ठीक है मनीष? All right. Now next question. ठीक है, easy question. What is the imaging modality given below? What have you guys marked? What is the imaging modality given below? So these are intestines. ठीक है, एंड कैन यू सी देयर इज अ बोन ऑल्सो? ये इलियाक क्रेफ्ट दिख रही है इधर, तो बोन इज वाइट, सो एमआरआई इज रूल्ड आउट। एमआरआई नहीं है आंसर। ठीक है, एक्सरे जैसा लग रहा है, नहीं। बेरियम एनीमा भी एक्सरे जैसा ही होता है, तो वो भी नहीं है। सो द आंसर हियर इज, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, सीटी एंटेरोग्राफी। राइट, सो सीटी एंटेरोग्राफी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ulceroconstrictive disease of bowel. What are ulceroconstrictive disease? TB and Crohn's. मेनली, ठीक है। टीबी क्रॉन्स की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा? एब्डोमिनल टीबी, सॉरी नॉट नॉर्मल टीबी, एब्डोमिनल टीबी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बिकम्स सीटी एंट्रोग्राफी। नाउ व्हाट इज द एजेंट दैट वी यूज हियर? सो यू यूज अ हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। दो आपको याद रखने हैं, वन इज मैनिटॉल एंड अनदर वन इज पेगलेक. So mannitol and peglec, these are the two important hygroscopic agents which we use in CT enterography. So ये लोग क्या करते हैं? So ये वाटर को इंटेस्टाइन लूमेन के अंदर होल्ड करके रखते हैं, so the water cannot absorb into the intestinal walls, right? So नॉर्मल जब हम पानी पीते हैं तो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, बट मैनिटॉल पेगलेक के साथ इंटेस्टाइनल ल्यूमन में ही रहता है वाटर, सो इट डिस्टेंड्स द इंटेस्टाइनल wall, intestinal lumen, and your mural pathologies, your wall pathologies, mural मतलब bowel wall pathologies are better depicted. ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 42-year-old, सो वी आर नाउ डीलिंग विद INICT 2021 एक क्वेश्चंस, ठीक है। इससे पहले भी 2021 के थे, मई वाले थे। अब नाउ वी हैव कम टू नवंबर INI 2021 क्वेश्चंस। So this is an important question, and again hepatobiliary, in fact not hepatobiliary, biliary, biliary pathologies are very very important, very important. So क्या क्वेश्चन है? 42-year-old female presented with pain in the right upper quadrant on the 5th post-operative day following laparoscopic cholecystectomy. So post coli pain की बात हो रही है. She is icteric also. Great. Her bilirubin is high. On ultrasound there is fluid collection in the Morrison's pouch. A bile leak is suspected, which is the most sensitive investigation. What have you guys marked? क्या मार्क किया है बताओ? मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब हुआ? देर आर नो फॉल्स नेगेटिव्स, ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. What have you guys marked? So typically biliary लीक में अगर पोस्ट ऑप लैप कोली पेन है, so you typically suspect a bioloma, right? Now the first investigation in such cases is an ultrasound.
And ultrasound tells you two things: whether there is any collection in Morrison's pouch or there is any intrahepatic biliary radical dilatation or IHBRD. So इन्होंने क्या बताया अल्ट्रासाउंड पे? यहाँ पर अल्ट्रासाउंड में देयर वाज फ्लूइड इन द मॉरिसन्स पाउच. ठीक है, मतलब देयर इज सम बाइल लीक. नाउ यू वांट टू कंफर्म, दैट इज यू वांट एन इन्वेस्टिगेशन which is very sensitive, that is it picks up even small amounts of bile leak. So which is that investigation? That investigation is HIDA. ठीक है, that investigation is a HIDA scan. Now HIDA scan, let me tell you, is not done nowadays. Nowadays if you ask me, by the way इसका आंसर HIDA ही रहेगा. अगर कुछ क्वेश्चन में पूछा जाए what is the most sensitive investigation to detect this pathology, the answer is HIDA scan. This is the most sensitive. Now if the question was that same question, that day 5 post lap coli, there is pain, there is jaundice, ultrasound shows collection. Now if you're asked what is the next step, तो क्या मार्क करोगे? अगर नेक्स्ट स्टेप पूछा गया तो क्या मार्क करोगे? व्हाट विल यू मार्क? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अल्ट्रासाउंड में कलेक्शन है, हम बाइलिक सस्पेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? सीसीटी, एमआरसीपी और ईआरसीपी. सो नेक्स्ट स्टेप टिपिकली इज एन एमआरसीपी. ठीक है, हीडा स्कैन इज नॉट यूजली डन नाउ इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. जो पुराने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते थे वो कराते थे हीडा स्कैन, बट नाउ यू डू एन एमआरसीपी. एंड एमआरसीपी शोज दो पॉसिबिलिटी हैं. एमआरसीपी इज ईदर it either shows bile leak or it does not show bile leak. ठीक है, तो अगर बाइल लीक दिख गया एमआरसीपी में तो नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा ईआरसीपी, आपको स्टेंट करना है. बट अगर एमआरसीपी पर भी आपका बाइल लीक नहीं दिखा, देन यू डू अ हीडा स्कैन फॉलोड बाय ईआरसीपी. ठीक है, सो दिस इज द टिपिकल सीक्वेंस व्हिच इज नाउ डन. नेक्स्ट स्टेप पूछा जाए तो एमआरसीपी है. अगर मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट दिस पैथोलॉजी पूछा है, देन आंसर इज हीडा स्कैन. नाउ सिमिलर अगर एक क्वेश्चन और बन जाता, मैं इसको लेट मी ऐड अनदर पेज बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इफ द सेम क्वेश्चन हैड आस्क्ड यू बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट बाइल लीक, तो क्या मार्क करते? और जब भी आंसर में आ गया बेस्ट, then what are we dealing with? We are dealing with the gold standard, and gold standard in bile leak is ERCP. ठीक है, because it is both diagnostic plus therapeutic. Diagnostic कैसे? Because it will show dye leak. जहां भी हम ERCP में डाई डालेंगे, जहां से भी लीक होगा वहां से लीक होने लगेगा, so we can confirm. And therapeutic because we can do CBD stenting. ठीक है, गुड. सो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन विल बी ERCP. तो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे with respect to bile leak. This is a very very important, very very common topic asked in INICT. INICT loves post lab coli complications because they're very common. ठीक है, so students should know what is the next step that they have to order. First investigation is always an ultrasound to see collection and IHBRD. Next investigation, next step is usually an MRCP, and next step after that is an ERCP.
All right. Okay, let's move on to the next question now. A 24-year-old patient comes to the office to evaluate sneezing, cough, fever, and pain behind the eyes. Okay, he is being diagnosed with sinusitis. Okay, so sinusitis is the provisional diagnosis. The radiograph is shown below to better assess the frontal sinus. What is the common name of this view? So which दो इंपॉर्टेंट व्यूज कौन से होते थे हमारे साइनसिस के लिए? साइनसिस के एक्सरे व्यूज देख लेते हैं। एक होता था वाटर्स एंड अनदर वन वाज कैडवेल्स। कैसे याद रखते थे? वाटर्स में डब्ल्यू है, सो डब्ल्यू को उल्टा कर दो, एम बन जाएगा। ठीक है, सो वाटर्स वॉज फॉर मैक्सिलरी एंड सो दूसरा किसके लिए था? कैडवेल्स। कैडवेल्स है हमारा फ्रंटल के लिए। ठीक है, सो द आंसर इज कैडवेल्स व्यू। सो लेट्स रिवाइज द पीएनएस व्यूज। वाटर्स व्यू इज दिस लाइक दिस, हम ऊपर देख के करते हैं एंड रेस सामने से आती हैं हमारे। ठीक है, रेस सामने से आ रही हैं लाइक अ डब्ल्यू, यूर रीडिंग नमाज, राइट? सो दिस इज मैक्सिलरी साइनस। डब्ल्यू को आप उल्टा कर दो, दिस इज एम। तो दिस इज फॉर मैक्सिलरी साइनस। इफ अ वाटर व्यू में ही आपने माउथ ओपन कर लिया, then that is known as a Pierce view. An open mouth waters view is a Pierce view. सेकेंड इज कैडवेल्स। तो डब्ल्यू में ऊपर देख रहे हैं, ऑपोजिट हो जाएगा कैडवेल्स में। कैडवेल्स में सामने से रेज आएगी तो कहाँ पर पड़ेंगी? फोरहेड पे। फोरहेड में क्या है? फ्रंटल साइनस। सो कैडवेल इज फॉर फ्रंटल साइनस एंड सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। फ्रंटल साइनस पूछा जाता है क्वेश्चन में। ओके, नाउ लेट्स सी टू अदर इंपॉर्टेंट व्यूज। तो टाउन्स व्यू इज फॉर इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड टाउन्स व्यू में नीचे देखते हैं बिल्कुल, एंड रेस आर लाइक दिस। सो पीछे का पार्ट दिखता है हमें यहाँ पे। सो पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, पोस्टीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस एंड डॉर्सम सेले। सो रिमेंबर टाउन्स में सब पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स आर सीन। इन टाउन को कैसे याद रखते हैं? टाउन को डाउन में कन्वर्ट कर लो। नीचे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं तो पीछे की चीजें देखेंगी। ठीक है, सो पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, पोस्टीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस एंड डॉर्सम सेले। And finally, your lateral view is known as the Law's view, in which we see the mastoid pneumatization. Law's view, you see mastoid air cells, internal auditory canal, and sinus plate and dural plate. Dural plate. So this is your internal acoustic canal, your sinus plate, your dural plate, and the mastoid air cells. Okay, chalo, next question, next PYQs. We are currently covering November 2021. A 40-year-old male patient with a 2-year history of mucopurulent cough underwent CT chest. What is the most likely diagnosis? What have you guys marked? क्या मार्क करा है आपने, बताइए? Okay, Nelson. Nelson has marked A. Manish, what have you marked? ठीक है, so buzzwords क्या हैं? Buzzwords are mucopurulent cough. And what is shown in the X-rays? You see that the bronchi are dilated. The bronchi are dilated. And what is this sign known as? This is known as signet ring sign. किसमें दिखता है signet ring sign? Dilated bronchi. And क्या condition है? The condition is bronchiectasis. ठीक है, bronchiectasis का clinical feature क्या होता है? Copious amount of sputum. बहुत सारा sputum निकलता है. This is bronchiectasis. Okay, so the answer is bronchiectasis, signet ring sign. What are the other signs? So another one is tram track.
sign. This you see in tractional bronchiectasis. ठीक है. Name an important condition. ABPA में what type of bronchiectasis do you see? In ABPA you see central bronchiectasis. Central bronchiectasis is seen in ABPA. Allergic, APBA नहीं है, sorry, this is ABPA. Allergic bronchopulmonary aspergillosis, you see central bronchiectasis. Okay, next question. A 40-year-old male with progressive forward bending with increasing stiffness of the spine. He has increased stiffness in his lower back, hip, and difficulty breathing. A CT spine was performed and is shown below. What is the likely diagnosis? So, what is this showing you? So, you are seeing that there is ossification or ankylosis of the adjacent vertebrae. This is syndesmophytes. किस में दिखती हैं आपको syndesmophytes? आर दे ऑस्टियोफाइट्स और आर दे syndesmophytes? क्या है ये? ऑस्टियोफाइट्स क्यों नहीं है? तो ऑस्टियोफाइट्स इसलिए नहीं है बिकॉज ऑस्टियोफाइट्स जब होती हैं तो उनकी ऐसे लैटरली निकलती है आउटग्रोथ, जबकि जो सिंडेस्मोफाइट्स हैं, सिंडेस्मोफाइट्स आर परपेंडिकुलर टू योर एंड प्लेट्स. So they are syndesmophytes. And what does this represent? This represent ossification of anterior longitudinal ligament. Okay, so this is ankylosing spondylitis, AS. ठीक है नेल्सन, this is AS. Cystic fibrosis में also, yes, you are right, Nelson. In cystic fibrosis also you see bronchiectasis. In cystic fibrosis you also see bronchiectasis, and they are upper lobe predominant. ठीक है. In Carter-Jenner syndrome also you see bronchiectasis, but that is lower lobe predominant. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 20. अच्छा, साइंस क्या है? व्हाट आर द वेरियस साइंस? बताओ, ये रह गया हमारा. व्हाट आर द वेरियस साइंस ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? एक ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस इसमें भी मिलता है. डैगर साइन, एंडरसन साइन भी मिलता है एक. रोमानस लीजन. व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज एमआरआई. एंड एमआरआई में क्या हमें दिखता है? सेक्रोइलियाइटिस. Okay, next question. A 22-year-old male is brought to the emergency department by his father 3 hours after a fall from roof. Patient complains of abdominal pain. Alert, oriented, time and space. He is not confused. The patient has blood pressure 90/60. ठीक है, alert है, oriented है, but shock में है. Other physical examinations of the patient are unremarkable except for mild swelling in the umbilical region. The doctor advised an E-fast. Which of the following areas evaluated along with the abdomen during the investigation involved in the patient's pathology? So बताओ, apart from abdomen, which other area do you evaluate in E-fast? ठीक है, सो E का क्या मतलब है? E is extended fast. And what do we evaluate here? We evaluate the pleural cavities. For what? For
Hemothorax. For hemothorax. So we use the we evaluate thorax in addition. ठीक है. Now, do we evaluate pneumothorax in EFAST? तो न्यूमोथोरैक्स के लिए हम अलग से करते हैं एक न्यूमोस्कैन. न्यूमोस्कैन में क्या करते हैं? वी कीप द प्रोब्स इन द एंटीरियर चेस्ट, इन द एंटीरियर चेस्ट, एंड यहां पर व्हाट डू वी सी? वी सी बारकोड साइन, barcode sign on M mode and absence of lung sliding on B mode. B mode ultrasound पे pneumothorax से क्या साइन है? Absence of lung sliding. But if you're asked most specific sign of pneumothorax on ultrasound, then that is the lung point sign. That is lung point sign. Okay, so this was regarding your pneumoscan or pneumothorax. Okay, next question. Which of the following findings are seen in a high resolution CT scan of fungal pneumonia? So HRCT findings पूछ रहे हैं. HRCT findings of fungal pneumonia. चलो बताओ. Do we see interlobular septations, peripheral wedge-shaped consolidations, pleural effusion, cavitary lesions with surrounding ground glass opacities? क्या मार्क किया है आंसर? What have you marked? Do we see interlobular septations? Hassanur? No, interlobular septations are a features of viral pneumonia. ठीक है, this represent interstitial. This is also known as interstitial pneumonia, and they are seen in viral pneumonia rather than fungal, not even bacterial. ठीक है. Peripheral wedge-shaped consolidations, can we see? Yes, we can see them. कि अगर ये हमारा lung है, peripheral wedge-shaped consolidations can be seen. Pleural effusions? No, pleural effusions are a feature of bacterial pneumonia and TB. ठीक है. Cavitary lesions with surrounding ground glass opacities? Yes, ground glass opacities are a feature of fungal pneumonia. ठीक है. सो क्या आंसर हुआ हमारा? सेकंड इज करेक्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट. द आंसर इज डी. गुड रोहन. Yes, the answer is D. Pleural effusions are a feature of bacterial pneumonia and tuberculosis, not fungal pneumonia. So अगर मैं आपसे बोलूं फंगल निमोनिया में हमें क्या क्या मिलता है? We get consolidations. And what type of consolidations? Patchy consolidations. We get ground glass opacities. अगर क्वेश्चन में आए लोबार कंसोलिडेशन, आर लोबार कंसोलिडेशन अ फीचर ऑफ फंगल निमोनिया? नो, दे आर अ फीचर ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया. तो फंगल निमोनिया में हमें मिलते हैं कंसोलिडेशंस, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज. वी कैन ऑल्सो गेट कैविटीज, कैविटेशंस भी मिल सकते हैं. वी कैन गेट ट्री इन बड नोड्यूल्स. Tree bud nodules are not specific for tuberculosis. We can see them in fungal pneumonia also. But what are unlikely? What are unlikely findings in fungal pneumonia?
Number one is pleural effusion. Number two are interstitial thickening. And number three are bulky mediastinal or hilar lymph node. Okay, so these are the findings of fungal pneumonia. Now tell me few important signs in fungal pneumonia, named signs. Number one is CT halo sign. किसमें दिखता है? Invasive aspergillosis. Number two, you see reverse halo sign. किसमें दिखता है? Invasive mucormycosis. Number three, bird nest appearance. किसमें दिखता है? Again, invasive mucormycosis. Number four, air crescent sign. किसमें दिखता है? Invasive aspergillosis on treatment. ठीक है, एयर क्रिसेंट साइन इन्वेसिव एस्परजिलोसिस में दिखता है. ठीक है, एस्परजिलोमा में क्या दिखता है? मोनॉड साइन. यू सीन एस्परजिलोमा. वो जो एयर क्रिसेंट आप बोलते हो ना, दैट इज एक्चुअली मोनॉड साइन. मोनॉड साइन क्या है कि जब आप पेशेंट की पोजीशन चेंज करोगे तो एयर क्रिसेंट की शेप चेंज हो जाएगी, बिकॉज देयर इज अ मोबाइल फंगल बॉल विद इन द कैविटी. दैट इज द मोनॉड साइन, दैट इज सीन इन एस्परजिलोमा. सिक्स्थ कौन सा साइन पढ़ेंगे फंगस से रिलेटेड? फिंगर इन ग्लव अपीयरेंस, seen in ABPA. Seventh, high attenuation mucus. किसमें मिलता है? अगेन ABP. हाई अटेन्यूएशन म्यूकस का दूसरा नाम है हैम, seen in ABP. Okay, so these are the important signs of fungal pneumonia. Okay, next question. अच्छा, one of the important things that come, and this came in INI-CT. This was INI-CT November 2024. कि if there is pleural effusion and you do a tap, ठीक है, the ADA is negative on HRCT, you see tree in bud. This is also suggestive of fungal infection. ठीक है, pleural effusion is rare in fungus. It is rare, but it can be seen. But typically ADA, which is adenosine deaminase, ADA is negative. ADA is negative. Chalo, next question. A child presents with cyanosis. Easy question. His chest radiograph is shown below. What is the likely diagnosis? What have you guys marked? Easy question. साइनोसिस है तो मतलब राइट टू लेफ्ट शंटिंग होगी. नाउ राइट टू लेफ्ट शंटिंग में क्या देखते थे हम? पहला चीज देखते थे हम हार्ट साइज. नहीं, सबसे पहले हम देखते थे पल्मनरी वैस्कुलेचर, पल्मनरी ब्लड फ्लो. अगर पल्मनरी ब्लड फ्लो कम है तो दो क्या डिडीज होती हैं? टॉफ एंड एब्स्टीन. लेट मी राइट इट अच्छे से. टॉफ एंड एब्स्टीन. एंड अगर पल्मनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, मतलब प्लेथोरा है, तो क्या डायग्नोसिस होते हैं? तो क्या डिफरेंशियल्स होते हैं हमारे सारे टी वाले? सो TGA, TA PVC,
ट्रंकस आर्टेरियोस सब। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा पल्मनरी ब्लड फ्लो कम है, ब्लैक लंग्स है। सो दिस इज पल्मनरी ऑलिगीमिया। तो क्या क्या रूल आउट हो गया इसमें? योर टीएपीवीसी इज आउट, टीजीए इज आउट, यू आर लेफ्ट विद एप्स्टीन एंड टॉफ। नाउ एप्स्टीन एंड टॉफ में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? टॉफ में देर इज हार्ट साइज enlarged, in Epstein there is cardiomegaly, and in TOF there is normal sized heart. So इसमें क्या है normal sized heart? आंसर क्या है? सिंपल, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो आंसर इज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। अब वो अलग बात है कि आप सबको इसमें बूट शेप्ड हार्ट भी मिल गया, बट not always will you see a boot shaped heart. It is not seen always. Okay, you have to follow this algorithm. First thing that you will see is pulmonary blood flow. If pulmonary blood flow is less, you think of TOF and Epstein. If it's increased, you think of TGA, TAPVC, truncus arteriosus. Now, reduced pulmonary blood flow में, then you look at the heart size. If heart size is enlarged, it is Epstein. If it is normal, it is TOF. हाँ, तो RVH दिख सकता है यार नेल्सन, RVH कैन बी सीन। RVH अगर हो रहा है, दैट डज नॉट मेक इट कार्डियोमेगली। कार्डियोमेगली की क्या डेफिनेशन है? कार्डियोमेगली इज जज्ड बाय योर सीटी रेशो। ना ये मुझे बताना पड़ेगा अलग से शायद, है? I think I have to explain this. Let me just explain you that RVH does not mean cardiomegaly. So cardiomegaly is largest heart diameter divided by your largest thoracic diameter, right? Now in tetralogy of Fallot, what happens that although there is right ventricular hypertrophy, that causes upturning of the cardiac apex. So let's say the cardiac apex was like this earlier. Now the RVH has caused it upturned, and that is how we identify the right ventricular apex. But the heart size remains same. So that is what is very important, that in isolated RVH, that when the RVH is not associated with LVH or RVH is not associated with right atrial enlargement, only the ventricle is enlarged. The heart 5 does not enlarge. Why? Because the heart turns upon itself like this. So the CT ratio remains same, and hence there is no cardiomegaly. So isolated RVH does not mean that there is cardiomegaly. Cardiomegaly कैसे जज करते हैं हम? By CT ratio. अगर CT ratio आपका ठीक है, so even though there is chamber enlargement, you will not call it cardiomegaly. So the next question is, an elderly lady presents with abdominal pain and distension. She has a history of scoliosis. Given below is the erect X-ray abdomen radiograph of the lady. What is the most likely diagnosis? Okay. So what have you guys marked in this question? What have you guys marked? So elderly lady presents with abdominal pain and distension. History of scoliosis. So what do you typically see? You see a coffee bean sign. This is a coffee bean sign. Yeah, so the answer here is large bowel obstruction with sigmoid volvulus. The sign that you see here is known as coffee bean sign. And coffee bean sign is what? There is volvulus of the sigmoid. So the two twisted loops of the sigmoid appears like that of a coffee bean. So that is the coffee bean sign. Now, if it was a fecolith appears hyperdense on a X-ray. So you would see areas of hyperdensity within the bowel, but that is not seen here, right? So this is typical of sigmoid volvulus. This is the coffee bean sign. Okay, next question. A 34-week primary gravida is detected to have intrauterine fetal demise. So now we have moved on to May 2022 question. So se pehle we were doing November INI-CT. Abhi we are doing May 2022 INI-CT questions. So 34-week primary gravida is detected to have intrauterine fetal demise on ultrasound. The finding of hyperechoic air specks within the blood vessels of fetus is known as what? What have you guys marked? This is an AIMS question. क्या mark किया है इसमें? Hyperechoic air specks within the blood vessel. Yes, I think we are back. Yes, thank God. So the last question, what was this? The name of the sign was coffee bean sign.
है ना। तो कॉफी बीन साइन इज सीन इन सिग्मोइड वॉल्वुलस। और फीकल वॉल्वुलस में क्या मिलता है हमें? फीकल वॉल्वुलस में वी गेट अ सी साइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 वीक प्राइमरी ग्रेविटा, ठीक है नेल्सन, यू हैव मार्क्ड रॉबर्ट साइन. So hyperechoic air specs within the blood vessels. Yes, this is in fact Robert's sign. Yes, this is Robert's sign. So there are two important signs of intrauterine fetal demise. Okay, one of them is Robert's sign, which we have read now. That is hyperechoic specs within the blood vessel. That is blood vessels के अंदर you see air. So this is nothing but air within blood vessels. And why is there air? Because of putrefaction. ठीक है. Now the second important sign is Spalding sign. एंड स्पॉल्डिंग को आप कैसे याद रखोगे? स्पॉल्डिंग को आप याद रखो बाय द वर्ड मोल्डिंग. स्पॉल्डिंग इज मोल्डिंग. ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन्स ऑफ फीटस. एंड ओवरलैपिंग क्यों होती है फीटस स्कल बोन्स की? बिकॉज ब्रेन इज अंडरगोइंग नेक्रोसिस, राइट. सो ब्रेन गलने लगता है, तो हमारा स्कल की जो बोन्स होती हैं दे ओवरलैप ईच अदर. दैट इज नोन एज द स्पॉल्डिंग साइन. दीज आर टू इंपॉर्टेंट इंट्रायूट्राइन साइन ऑफ फीटल डिमाइस. नाउ हाइड्रॉप्स अपीयरेंस क्या होती है? दिस इज नथिंग बट फ्लूइड एक्यूमुलेशन. दिस इज फ्लूइड एक्यूमुलेशन. एंड कहाँ कहाँ मिलता है आपको? स्किन में मिलेगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू में. यू सी इट इन द स्किन, इन पेरिटोनियम इन द फॉर्म ऑफ ascites. You see pleural effusion. And why does this happen? It happens due to fetal anemia. ठीक है. एंड फीटल अनीमिया कौन सी कंडीशन में मिलता है हमें? वी सी दिस इन RH आइसो इम्यूनाइजेशन. ठीक है. Now maceration is not seen on ultrasound. Maceration is actually necrosis of the tissues. That is, you see it on fetal autopsy. It is not seen on fetal ultrasound. So these are the two important signs of intrauterine fetal demise: Spalding sign and Robert's sign. Okay. Now let's move on to the next question. Eggshell calcification is not seen in the following condition. So this is again May 2022. This also came in FMG exam. तो अगर आप कुछ स्टूडेंट्स एफएमजी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो यार बहुत सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं एम्स, आईएनआईसीटी, एफएमजी. आई वुड से तीनों पेपर के करो, तीनों टाइप ऑफ पेपर्स करो. तीन ही पेपर्स हैं यार, एफएमजी, आईएनआईसीटी एंड नीट पीजी. एंड अगर सारे आप पीवाईक्यूज कर लोगे, यू आर सॉर्ट ऑफ डन विद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. नाउ एक्चुअल कैल्सिफिकेशन इज नॉट सीन इन विच आर द फॉलोइंग कंडीशन. सो डज सिलिकोसिस शो? यस, सिलिकोसिस का एक हॉलमार्क फीचर है. सार्कोइडोसिस? यस, inactive sarcoid can show. Post radiation therapy of lymph nodes? Yes, they can show dystrophic calcifications. But metastatic lymph nodes, can they show eggshell calcification? No. So the answer here is metastatic. तो मेटास्टैटिक में क्या मिलता है हमें? अगर ये lymph node है, if this is our lymph node, this is the medulla and this is the cortex. What do we see here? In a metastatic lymph node, there is effacement of cortex and medulla. Effacement of cortex and medulla of lymph node. ठीक है. इससे पहले क्या मिलता है? इससे पहले we see cortical thickening. पहले cortex thick होता है, उसके बाद the cortex and medulla both becomes effaced. These are the findings of metastatic lymph nodes.
Next question. A 55-year-old man presents with hematuria and a mass in the left kidney. What is the diagnosis? So this is an easy question, ठीक है. Renal angiomyolipoma क्यों नहीं है? Because there is no fat. Oncocytoma क्यों नहीं है? Because there is no radial scar. No radial scar. RCC is the answer. And renal cyst क्यों नहीं है? Because it is solid. Renal cyst नहीं है. Solid lesion is given. The answer is RCC, but it is even this was an easy question. But if one of the options, अगर E option में ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा दिया होता, देन आप क्या मार्क करते? इफ द ऑप्शन वन ऑफ द ऑप्शन वाज TCC, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, तब आप क्या मार्क करते? RCC की TCC? Nelson, tell me, if TCC was one of the options, what would you have marked? So if TCC was one of the options, that would have been the right option. Why? Because the patient has hematuria and the mass is in the shape of the kidney only. It is not protruding out of the kidney. This is typically a bean shaped mass. ठीक है. RCC is typically a ball shaped mass. बॉल शीट माने कि बाहर से ऐसे एक्सोफिटिक लीजन मिलेगा. दैट इज टिपिकल ऑफ RCC. Endophytic lesions are typical of transitional cell carcinoma. TCC are endophytic lesions. ठीक है. So if TCC was an option, you should have marked TCC, but that is not in the answer. So the answer here is RCC. Okay, next. CT scan protocol for a trauma patient includes all except. So CT head and C spine is routinely done. CT abdomen is done if either it is fast, positive, and stable patient, or there is a dangerous mechanism. Then also you do a CT abdomen. But CT limb is not routinely done. It is not part of the CT scan protocol. CT limbs is only done if you are planning internal fixation based on X-ray, not chest X-ray, based on X-ray, limb X-ray. ठीक है. रूटीनली नहीं करते हैं. अगर आप कुछ इंटरनल फिक्सेशन करने वाले हो, कि मान लो नेल डालना है या प्लेट्स डालने हैं या स्क्रूज डालने हैं, देन यू डू अ CT स्कैन ऑफ द लिम्ब. इट्स नॉट पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल. ट्रॉमा प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट, न्यूबॉर्न बेबी प्रेजेंटेड विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. व्हाट इज द डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द इमेज? सो न्यूबॉर्न बेबी है, तो इट्स अ नियोनेट. नियोनेट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्या क्या DDs हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न, कॉन्जेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया. ठीक है. तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? यू सी दैट देर आर नो bowel loops in the abdomen and there are air lucencies seen in the left hemithorax. What is the diagnosis? The answer is CDH, or a congenital diaphragmatic hernia. Now CDH left is more common than the right. Most common site is posterior, which is known as Bok-Delic hernia. Anterior hernia को क्या बोलते हैं? Morgagni's hernia. And what is contraindicated? Bag and mask ventilation is contraindicated in CDH. So what do? You do invasive positive
ventilation. So you put an endotracheal tube and inflate the lungs. Next question, what is the diagnosis based on the given image? It is an easy question. What is the name of the investigation? It is barium swallow. And what sign is seen? Corkscrew esophagus. ठीक है, what is the diagnosis? This corkscrew appearance. This is diffuse esophageal spasm. Now clinical features में क्या मिलेगा आपको? हिस्ट्री में you will see history of dysphagia plus chest pain. ठीक है, बर्ड बीकिंग किस में मिलती है? बर्ड बीकिंग वी सी इन अक्लेजिया. रैट टेल किस में मिलेगी? सीए ईसोफेगस. Next question, identify the anatomical variant shown in the CT scan. What is shown? Tell me. What have you guys marked? What is the anatomical variant? So what structure is this? This is the inferior turbinate. What is this? This is the middle turbinate. And superior turbinate इस section में नहीं दिख रहे, थोड़ा posterior section हम करेंगे तब दिखेगा. Now what is this? This is what is a typical location of concha bullosa. Now this is not pneumatized superior turbinate. This is concha bullosa. ठीक है, ओनोडी सेल्स क्या होती हैं? ओनोडी सेल्स आर posterior ethmoidal cells above the sphenoid sinus. So there are variation of posterior ethmoidal cells. Haller cells क्या थे? They are inferior orbital cells. They are a variation of anterior ethmoidal cells. This is the third variation which is important. This is concha bullosa. Next question, which of the following statement is true regarding corads? So corads किसके लिए करते हैं हम? कोविड, निमोनिया, रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम. ठीक है, so what does it tell? It tells the likelihood of COVID pneumonia. That is, patient has symptoms, but he has still not gotten RT-PCR. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? RT-PCR. RT-PCR अभी हुआ नहीं है. चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन के बेसिस पर. किसके बेसिस पर करते हैं? इट इज डन ऑन HRCT चेस्ट. You have to see the likelihood of COVID-19. So what is CORAD 0? So is CORAD 0 normal lung? No. CORAD 0 is inadequate study. Normal lung is CORAD 1. Is CORAD 5 typical of COVID-19? Yes. Is pleural thickening a typical feature of COVID-19? No. Lobar consolidation typical feature of COVID-19? No. Lobar consolidation is typical of bacterial pneumonia. So what are typical features of COVID-19? The answer is B. Typical features of COVID-19 are bilateral, lower lobe predominant, peripheral ground glass opacities. ठीक है, तो अगर हमारा ये चेस्ट एक्सरे है, ये सीटी स्कैन है, दिस इज द राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग, यू सी पेरिफेरल
lower lobe predominant, ground glass opacities. These are typical of COVID-19. They are CORADS 5. Chalo, next question. This is an interesting question. So 65-year-old non-smoker male presented with nasal blockage and occasional blood mixed nasal discharge with the following radiological and endoscopic findings. What is the likely diagnosis? So, what is this investigation? First of all, this is an MRI and this is a coronal MRI. Now, on this MRI, what do you see? This is your right maxillary sinus and this is your left maxillary sinus. Now, in the left maxillary sinus, you see that there is a large lesion which is coming out into the nasal cavity. Okay? And if you do an endoscopy, what do you see? You see that this lesion has this cerebriform appearance. This is typically known as cerebriform appearance. Okay. Now, this is typical of inverted papilloma. Take a maxillary sinus mass coming out into the nasal cavity showing a cerebriform appearance. This is seen in inverted papilloma. Esthesio-neuroblastoma kahan milega? This will be seen here in the roof of the nasal cavity and it goes inside the olfactory bulbs into the brain. So olfactory bulb se arise karta hai, roof of the nasal cavity and goes inside the brain. JNA kahan se arise karta hai? So esthesio-neuroblastoma arises from olfactory bulb. JNA कहाँ से राइज करता है? अराइजेस फ्रॉम स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन. Now maxillary sinus कैंसर क्यों नहीं है? Now maxillary sinus कैंसर की एंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स आर नॉट सजेस्टिव. तो maxillary sinus कैंसर जब होता तो एंडोस्कोपी पर it should have shown you necrosis. It should have shown you hemorrhage, necrosis and थोड़ा irregular सा mass. This is not like that. This is a typical cerebriform appearance which is seen in inverted papilloma. ठीक है? Good, Rukmani. Okay, next question. Investigation of choice to localize parathyroid adenoma. देखिए recent भी पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है. Among the given option, the best is Sefta-Mebi scan. But if you are asked if the option shows Sefta-Mebi SPECT, that is a better answer. Sefta-Mebi SPECT is a better answer. Now identify the MRI sequence. What have you guys marked? Identify the MRI sequence. Manish? Rukmani? Nelson has already said A. Okay, good. Dr. Tejesh? So what do you see here? You see that there are these big black dots in this sequence. Now what is this? This is typically known as blooming artifact. Okay? And you see blooming artifact in susceptibility weighted imaging, FWI. Now, hote kyun hai blooming artifact? What is susceptibility weighted imaging? So FWI stands for susceptibility weighted imaging. So which are the substances which shows susceptibility change? So this is shown by, so we are talking about susceptibility artifact.
and this is shown by two things. Number one is calcium and number two is blood. ठीक है, so this is used to pick up microcalcifications and microbleeds. एंड क्वेश्चन में क्या आएगा, कभी कभी माइक्रोब्लीड्स नहीं दिया होगा क्वेश्चन में. समटाइम्स इन द क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड सीएनएस वैस्कुलाइटिस. ठीक है, सीएनएस वैस्कुलाइटिस कभी कभी दिया जाएगा क्वेश्चन में. द आंसर इज SWI. नाउ 65-year-old male with history of AF is atrial fibrillation, presents to the casualty with right-sided hemiparesis and aphasia since 2 hours. So what are we dealing with? We are dealing with acute stroke. 2 hours का onset है. His BP is 160 by 110. RBS is 106. So RBS is normal. So there is no hypoglycemia. What one thing you have to rule out before labeling it as a stroke? Hypoglycemia. So his RBS is normal. NCCT is also normal. So that means there is no bleed. Bleed is ruled out. So what are you dealing with? You are dealing with an ischemic stroke and an acute ischemic stroke. What is the onset? Onset is 2 hours. So he is within the window period. What will you do next? Next step. A, B, B. Nelson is saying B. So would you do an MRI? No. MRI is not to be done here because stroke is a clinical diagnosis. Acute onset hemiparesis, NCCT normal, it is ischemic stroke. Now you want to do what? He is within the window period and he has right-sided hemiparesis. So large stroke. You want to see a large vessel occlusion, and to see that you have to do CT angio. And if there is large vessel occlusion, what will be the next step? The next step will be mechanical thrombectomy. Now next question comes, till when? So mechanical thrombectomy can be done till 24 hours. ठीक है, but up to 6 hours only CT angio is needed. After 6 hours, that is 6 to 24 hours के बीच में अगर आपको CT mechanical thrombectomy करना है, then you need a CT perfusion also. CT perfusion भी तब करना पड़ेगा. So here the answer is, next step is to see CT angio to see large vessel, and if there is an occlusion, we do a mechanical thrombectomy. So is this part clear? Why the answer is CT angio and not an MRI? देखो लैबेटोलॉल हम नहीं देंगे. वाई? बिकॉज बीपी बहुत ज़्यादा नहीं है. 180 के ऊपर होता देन वी वुड हैव गिवन लैबेटोलॉल. इन स्ट्रोक वी वांट टू मेंटेन अ स्लाइटली हायर ब्लड प्रेशर. एबीजी का कोई रोल नहीं है अभी. So this is the sequence of event in acute ischemic stroke. I hope this is clear. Any doubt in this question? No? Okay, let's move on to the next question then. A 48-year-old lady presents with right upper quadrant abdominal pain. Ultrasound reveals multiple GB calculi. So she has cholelithiasis, no wall thickening. CBD diameter, however, is 12 mm. GGT is 5 times normal. Alkaline phosphate is 400 international units. Other parameters are normal. What is the next step? So पहली बात आप याद रखो, what is the normal CBD diameter? This is less than 8 mm. So CBD is dilated. What have you guys marked? Mukesh is saying B. Next step B करेंगे direct.
क्या करोगे बाकी लोग नेक्स्ट? नेल्सन, रुक्मणी, मनीष? So what are we dealing with? We are dealing with CBD dilated, GGT raised, ALP raised. What are we dealing with? We are dealing with a CBD stone. So next step क्या होगा? D, A. तो CBD stone के लिए investigation of choice is MRCP and gold standard is ERCP. ठीक है, so the answer here is MRCP. कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। द आंसर हियर इज MRCP. अगर अल्ट्रासाउंड पे यूसी डायलेटेड CBD, नेक्स्ट स्टेप इज MRCP. MRCP में देर इज अ स्टोन. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज ERCP. ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन शोन बिलो. इज इट अ CT एंटेरोग्राफी? Is it a CT enterography? No. So this is a BMFT, barium meal follow through. A. Yes, the answer is A. Barium meal follow through. ठीक है, तो CT एंटरोग्राफी में बावल वॉल दिखती है आपको, एंड उसमें हम पॉजिटिव ओरल कंट्रास्ट नहीं देते. वी गिव मैनिटॉल विच इज अ न्यूट्रल ओरल कंट्रास्ट. ठीक है, यहाँ पर व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, मतलब बेरियम दे रखा है हमने. दिस इज बेरियम मील फॉलो थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्ट चेंबर कंप्रेसेस ईसोफेगस इन पेशेंट विद mitral stenosis? Good question. What have you guys marked? Asked in November 2022. Which heart chamber compresses esophagus in patients with mitral stenosis? So if this is my CT scan, this is the spine, these are my lungs, this is the heart. So anteriorly क्या chamber होता है हमारा? Right ventricle, then left ventricle, then right atrium and the left atrium. इसके पीछे trachea, esophagus. ठीक है, so what chamber of the heart compresses the esophagus in mitral stenosis? It is the left atrium. Left atrium is the posterior most chamber of the heart. No, right ventricle is the anterior most chamber of the heart. ठीक है, right atrium forms the right heart border and left ventricle forms the left heart border. So which chamber of the heart compresses the esophagus in MS? It is the left atrium. Next question, easy one. 36-year-old male underwent RTA, encephalitis performed. What is the likely diagnosis? It is not crossing the sutures. It is biconvex shaped. What is the answer? Answer is EDH. Next, 35-year-old trumpet blower presents with neck swelling. So trumpet blower and neck swelling. X-ray दे रखा है. What do you see? You see an air-filled
swelling, air-filled cavity, air-filled swelling, not cavity, air-filled swelling in the neck. What is the answer? It is laryngocele. Chalo, next. Identify the sign shown in the image. Easy question again. This is the sawtooth sign. Seen where? Sigmoid diverticulosis. Investigation of choice. Barium enema. एप्पल कोर साइन कहाँ मिलता है हमें? सी ए ईसोफेगस, या सॉरी सी ए कोलॉन में ही मिलता है. सी ए कोलॉन. corkscrew appearance, diffuse esophageal spasm, string sign of Cantor, intestinal TB. चलो, की रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन पेट. बहुत आसान क्वेश्चन है. 18 FDG, 18 फ्लोरीन. आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन फ्रॉम द चेस्ट टेक्सचर इन अ पेशेंट विद लो ग्रेड फीवर. बताओ क्या है भाई? बायलोबर small nodules, no specific distribution. ठीक है, इट इज होमोजीनसली स्प्रेड. क्या है? यस, दिस इज मिलियरी टीवी. millet shaped nodules. It is millet shaped nodules, millet sized, sorry, millet sized nodules scattered in bilateral lungs. And this is seen in progressive TB. प्रोग्रेसिव टीबी मतलब किसी इम्यूनो डिफिशियंसी या इम्यूनो सप्रेशन के अंतर्गत हुई है कोई टीबी, तो इट स्प्रेड्स होमोजिनसली थ्रू आउट बायलैटरल लंग्स. दिस इज प्रोग्रेसिव टीबी, मिलियरी टीबी. A 45-year-old presents with sudden onset colicky pain in the abdomen with vomiting. Supine X-ray is shown below. What is the diagnosis? So you see that the small bowel loops are dilated. Why small bowel? Because complete septations है इनमें. So these are valvular conniventus. ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो complete septations है. Valvular conniventus है ये. So first of all, this is small bowel. Small bowel obstruction. Now whether it is proximal small bowel or distal small bowel, वो कैसे चलेगा पता? So if your upper bowel loops are dilated, मतलब only jejunum, then it is a proximal small bowel. अगर ये ही नीचे तक dilated होते, मतलब ileal loops भी dilated हैं, तब हम बोलते distal small bowel obstruction. So here the answer is a proximal small bowel obstruction. Next, history of trauma, limb shortening. What is the most common nerve injured in this case? ठीक है, सो कौन सा टाइप ऑफ डिसलोकेशन है ये? दिस इज पोस्टीरियर dislocation. Which is the nerve injured? It is the sciatic nerve. ठीक है. शोल्डर में कौन सा कॉमन होता है? शोल्डर में anterior dislocation is common. Which is the nerve injured? Axillary nerve. Now, post-menopausal female with intermittent pelvic pain, X-ray abdomen is shown. What is the diagnosis? So here you see in this X-ray, there is this calcified mass, but it is showing this stippled calcification. ठीक है, this is popcorn calcification. Seen in a calcified fibroid. In a bladder calculus क्या होता? Bladder calculus में it is a lamellated stone. ये ऐसा homogeneous stone होता,
और उसके अंदर ऐसे लैमिलेशंस मिलते हैं आपको। इन ब्लैडर कैलकुलस यू गेट अ लैमिलेटेड स्टोन। ओवेरियन कैंसर डू नॉट कैल्सिफाई एक्सेप्ट कौन सा ओवेरियन कैंसर होता है, ट्यूमर होता है नॉट कैंसर, जिसमें कैल्सिफिकेशन मिलते हैं? डर्मोइड। डर्मोइड हैज कैल्सिफिकेशंस। और किडनी का कैलकुलस तो किडनी में मिलेगा, ब्लैडर में नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन प्रेजेंट आफ्टर 10 डेज ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, व्हाट इज द डायग्नोसिस? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। पोस्ट 10 डेज आफ्टर पैनक्रेटाइटिस कोई कलेक्शन दिख रहा है पैनक्रियाटिक लोकेशन में, इट इज अ सूडोसिस्ट। इट इज अ सूडोसिस्ट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सूडोसिस्ट? इट इज सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी। ठीक है, इट कैन ईदर बी डन एंडोस्कोपिकली और सर्जिकली। नेक्स्ट, 35-year-old female with dysphagia, regurgitation and weight loss. What is the likely diagnosis? So easy question है, female है, dysphagia, regurgitation, weight loss. What is the name of the sign? It is bird beak appearance. Diagnosis, eclasia cardia. Next question, बताओ, आसान है next question भी। 45-year-old had road traffic accident. Patient is stable but complaining of mild chest pain and dyspnea. Chest X-ray shown. What is the diagnosis? So diagnosis is not an issue. I think आप treatment बताओ, treatment क्या करोगे? So what do you see here? You see that the left lung is blacker than the right, and what do you see? That there are no vascular markings in this part of the lung. And you can see, if you zoom it थोड़ा बहुत, you can see a pleural line. So I think the diagnosis is not an issue. Everybody has marked pneumothorax, but tell me, what will be the treatment? Will you put an ICD or will you do a needle thoracotomy? What will you do? An ICD or a needle thoracotomy? Rukmani is saying needle. Needle. Nelson is saying needle. हम नीडल क्यों डालते हैं? आप बताओ कि हम न्यूमोथोरैक्स में नीडल क्यों डाल रहे होते हैं? क्यों डाल रहे होते हैं? नीडल इसलिए डालते हैं बिकॉज अर्जेंसी है। नीडल में क्या है कि आप नीडल डालोगे, एकदम से डिकम्प्रेस हो जाएगा, सारी हवा बाहर निकल जाएगी। जब अगर इमरजेंसी नहीं है, so what is a better modality, what is a better treatment? Putting an ICD, because ICD में एक बड़ी ट्यूब है, मल्टीपल होल्स हैं, ज़्यादा अच्छा ड्रेनेज होगा उससे। So needle thoracotomy is never the best sort of drainage. Yes, it is an emergent decompression. An emergent decompression कब करेंगे हम? When the patient is unstable. But if the patient is stable, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको, then you would put an ICD because ICD has better drainage. ठीक है, RTA हुआ है, उसको बार बार न्यूमोथोरैक्स होगा ना, क्योंकि एक बुल्ला रप्चर हुआ है या एक कोई लैसरेशन है लंग में. So you need to put an ICD because there is continuous air leak. A needle thoracotomy is never the permanent solution. He is stable, so ICD डालेंगे. ठीक है नेल्सन, गुड. What is the diagnosis of IVP image shown in the figure? ठीक है, आसान है. What is the name of the sign? Adder head or cobra head appearance? Answer is ureterocele. Okay, next question. A young male with head trauma is brought to the emergency in an unconscious state. He is intubated with low GCS. No verbal response, no movement on pressure, has features of
इंक्रीज्ड आईसीटी, ठीक है, काफ़ी सिक पेशेंट है, रेव्ड आईसीटी के फीचर्स हैं। एनसीसीटी ऑफ द ब्रेन इज नॉर्मल, इन स्पाइन इज ऑल्सो नॉर्मल, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? ठीक है, पुअर जीसीएस, हेड ट्रॉमा, एनसीसीटी नॉर्मल, व्हाट डू यू हैव टू थिंक ऑफ? हेड ट्रॉमा, पुअर जीसीएस, एनसीसीटी नॉर्मल, diagnosis is diffuse axonal injury. And what is the investigation of choice? It is MRI. And MRI में भी कौन सा sequence होता है? SWI is the sequence of choice because here you see microbleeds. ठीक है। Now post concussion syndrome में क्या होता है? Patient is drowsy. ठीक है, so GCS is low but not very low. ठीक है, सो अराउंड कितना मोर देन 13 होता है जीसीएस। सो पोस्ट कंकशन सिंड्रोम कम्स अंडर माइल्ड ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, माइल्ड टीबीआई में आता है वो। ठीक है, डीआई सीवियर टीबीआई में आता है, वेरी लो जीसीएस। यस नेल्सन ऑन डीडब्ल्यूआई, एफडब्ल्यूआई सॉरी, वी सी blooming artifact, yes, microbleeds appear as blooming. Now next, a child with bitemporal heminopia, his IQ is normal, his visual acuity is diminished. The radiological image of this patient is shown below. What is the most likely diagnosis? So first of all, tell me what modality is this? So this is an MRI. And can someone tell me what sequence is this? T1, T2 और flare? T1, T2 ही बताओ, flare बताना मुश्किल है। T1 और T2 weighted? What sequence is this? First answer this question. What sequence is this? T1 weighted or T2 weighted? नेल्सन कौन सा सीक्वेंस है ये? T2 क्यों बोल रहे हो? सब लोग मुझे पता था T2 बोलोगे, क्यों बोल रहे हो T2? बताओ, जूम करके बताओ, T1 है कि T2 है, अब बताओ। So can you see the CSF? CSF is black or white? CSF is black. तो T2 कैसे हो सकता है? It can't be T2. Just because you're seeing some bright structure does not mean it's T2. You have to look at the CSF. The CSF is not bright. So this is not T2 weighted image. In fact, this is a T1 weighted image. ठीक है, अब फ्लेयर क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज एक्चुअली a post contrast T1, so you can see the vessels also. This is the vein. ठीक है, this is a post contrast T1. This is a post contrast T1 weighted image. ठीक है, फ्लेयर वर्सेस T1 कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, उसके लिए आपको ग्रे मैटर व्हाइट मैटर देखना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है कि आपका जो व्हाइट मैटर है ना, ये सारा व्हाइट मैटर, अच्छा ये आपका देख लो, दिस इज योर कॉर्पस कैलोसम, दिस इज योर कॉर्पस कैलोसम। आप बताओ कि ये व्हाइट है कि डार्क है? कॉर्पस कैलोसम आपका ब्राइट है ना, व्हाइट है थोड़ा, तो दिस कांट बी फ्लेयर, दिस इज अ T1 weighted image. This is a T1 weighted image, it's not a flare image because corpus callosum, which is your white matter, अगर फ्लेयर होता तो corpus callosum would have been dark. So this is a T1 weighted image because your white matter tracts or corpus callosum is white. So there is no problem now. So this is a T1 weighted image. And what are you seeing? There is a lesion. There is a lesion in the suprasellar location. Suprasellar क्यों? क्योंकि I can separately see the pituitary. This is the pituitary. So pituitary से नहीं origin कर रहा है ये. This is not a pituitary origin mass. It is arising above the pituitary. अब ग्लायोमा भी हो सकता है ऑप्टिक नर्व का, और क्रेनियोफैरेंजियोमा भी हो सकता है।
ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा क्यों नहीं बोला आपने? बिकॉज ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा डज नॉट एनहांस, it does not enhance, and craniopharyngioma it enhances. ठीक है, तो द आंसर इज क्रेनियोफैरेंजियोमा. ठीक है, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा, ग्लायोमास इन जनरल डोंट एनहांस. एंड आपको किस में मिलता है टिपिकली? यू सी इट इन NF2, सॉरी NF1, नॉट NF2, यू सी इट इन NF1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. NCCT of a paranasal sinus. This is again an AIMS question. NCCT of paranasal sinus is shown below. What is the name of the sign shown? So first of all, can someone tell me the diagnosis? So what do you see? You see that the left nasal cavity, the left maxillary sinus are filled with some radiodense contents. ठीक है? And do you see any bony erosions? The bone is intact. There are no bony erosions. So it is unlikely to be a CA maxillary sinus. Carcinoma malignancy unlikely है. Bone is intact. And hyperdensity क्यों आ रही है फिर? Why is it hyperdense? Why is it bright? Because it is fungus. So I told you ABPA में high attenuation mucus होता था. जहां भी fungal elements होंगे, that area will be hyperdense. Now this is known as double density sign. Okay, double density sign, and it is seen in allergic fungal rhinosinusitis. ठीक है, AFRS बोलते हैं उसको, एलर्जिक फंगल राइनोसाइनोसाइटिस. दिस इज द डबल डेंसिटी साइन. तो डबल डेंसिटी क्या होती है? एक है इसमें ब्राइट डेंसिटी, और एक है मतलब हाइपरडेंस और हाइपोडेंस. सो द हाइपरडेंस component is the fungal element, and the hypodense component is your mucosa which is inflamed. So this is a double density sign seen in allergic fungal rhinosinusitis. Okay, next question. Time for manifestation of gross biological effects of ionizing radiation. ठीक है, बहुत टाइम लगता है, hours to years. Next question. Identify the bone marked. Again an easy question. So what is this? This is the medial part of the foot. What is this bone marked? This is the navicular. क्यूबॉइड यहाँ पर मिलेगी हमें. क्यूबॉइड यहाँ पर मिलेगी हमें. 35, next question. A 35-year-old male presented with pain and swelling around the wrist joint. There is no history of injury. X-ray is shown below. What is the most likely diagnosis? So you see an expansile lesion in the wrist, and it is showing multiple septations within. Now what is the location? It is epiphysis or epimetaphysis, and it is reaching till articular surface. क्या डायग्नोसिस है बताओ? बड़ा आसान क्वेश्चन है. दिस इज अ जायंट सेल ट्यूमर. ठीक है, GCT है सिंपल. एपीफाइसिस, 35-year-old अगेन. इसका क्या कंपैरिजन में होता है? इसके कंपैरिजन में यू सी एन ABC एनेड्यूसमल बोन सिस्ट which happens in less than 20 years, happens in metaphysis. Next question. An elderly male presented with multiple bone pains, anemia, renal failure, and proteinuria, and hypercalcemia.
X-ray skull is shown below. What is the likely diagnosis? So what are we dealing with? We are dealing with crab features. ठीक है, renal failure, anemia, bone lesions and hypercalcemia. With skull lesions, I am dealing with a multiple myeloma. Yes, Rukmani, ABC does not reach till the articular surface because it's in the metaphysis. प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या साइन मिलता है हमें? पेपर पॉट स्कल. What is the likely diagnosis shown in the CT scan of this patient? So what is the name of the sign? First tell me the name of the sign. This is popcorn calcification of lung seen in pulmonary hamartoma. Yes, lung popcorn calcification is pulmonary hamartoma. Now, if the question is popcorn calcifications of breast, ये किसमें दिखता है? Yes, this is seen in fibroadenoma. Or a good complete name is involuting fibroadenoma. So fibroadenoma typically do not show calcifications. Those fibroadenoma which are degenerating or involuting, they show these popcorn calcifications. And this type of fibroadenoma is BIRADS 2 or typical benign. Next question, what is the likely diagnosis based on the given image below? So very spottery hai ye. What is the name of the sign? Snowstorm appearance, also known as bunch of grapes sign. Seen in molar pregnancy. Now typical clinical features क्या मिलेंगे इसके? Amenorrhea, UPT positive, uterus size more than POG. So POG is 9 weeks, uterus size is 12 weeks. Amenorrhea, UPT positive. This is typically of molar pregnancy and patient has bleeding per vagina. No, this is not ectopic, Dr. Karthike. This is molar pregnancy. 35-year-old with thunderclap headache, NCCT is given. What is the diagnosis? Simple. Answer is SAH. What do you see? You see a star-shaped bleed. You see a bleed in the cisterns and sulci of the brain. So this is SAH. So SAH investigation of choice is NCCT. Most common cause? Trauma. Most common cause of non-traumatic SAH? Berry aneurysm. Investigation of choice for berry aneurysm? CT angiography. Now, investigation of choice for CT angiography, negative SAH. मतलब CT एंजियो आपने करा लिया बट वो नेगेटिव है, नॉर्मल है, तो व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? बताओ, टेल मी. Investigation of choice for CT angio negative SAH. No, it's not LP. You never do an LP in SAH. Okay, I'll give you option: MR angio, DSA, transcranial Doppler. What is the answer? Rukmani?
Manish? Yes, the answer is DSA. CT angionegative SAH, the answer is investigation of choice is DS. चलो, आइडेंटिफाई द मार्क स्ट्रक्चर बाय द एरो। क्या एरो में शो कर रखा है? बड़ा आसान है। तो दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन, द एरो शोज मिड ब्रेन। 2-year-old child given, what is the probability diagnosis? Easy. Again, you see air surrounding the liver, the spleen, the bowel. This is pneumoperitoneum. न्यूमोटोसिस नहीं है ये। न्यूमोटोसिस में फ्री एयर नहीं होती। न्यूमोटोसिस हैज इंट्राम्यूरल एयर। दिस इज फ्री एयर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइन? फुटबॉल साइन। ठीक है, द आंसर इज न्यूमोपेरिटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। 33-year-old फीमेल विद फीवर, वेट लॉस, एलिवेटेड एस लेवल्स। ठीक है, ये बजवर्ड है। विद हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस? सो हाइलर लिम्फेडेनोपैथी विद एलिवेटेड एस, नथिंग बट सार्कोइडोसिस। ठीक है, इफ normal ACE levels, then you have to first mark as TB. अगर ACE level elevated है तो the answer is sarcoidosis. Next question. A patient presents with painful bilateral hip joints, pigmented lesions on the skin, and precocious puberty. What is the most likely diagnosis? So skin lesions, precocious puberty, and bony lesions. Where do you see all this? You see this in McCune-Albright syndrome. Okay, good. What are these bony lesions? These are nothing but fibrous dysplasias. And you get multiple fibrous dysplasias. Multiple bones are affected. So polyostotic fibrous dysplasia. The skin lesions that you see here are known as cafe au lait spots. And precocious puberty is a type of endocrinopathy that you see in McCune-Albright. The answer is McCune-Albright syndrome. Yes, Shepherd's crook deformity. The name of the sign is Shepherd's crook. Shepherd's crook deformity. Okay, next question. Which of the following is true regarding CT scan? This is a recent INI CT question. The CT score of water is 0. Yes, we take it as 0. CT consists of unfiltered X-ray beams? No. None of the X-ray based modality uses unfiltered beams. All of them uses a filter. Five filter used to decrease dose to the patient. Next, CT is the investigation of choice for gallstones? No. Ultrasound is the investigation of choice. The typical effective dose of NCCT head is 20 millisieverts. No, it is around 2 to 3 millisieverts. The correct answer is A. The CT score of water is 0. Now, what is this score known as? This is your Hounsfield unit. ठीक है, दिस इज योर हाउंसफील्ड यूनिट। तो -1000 HU किसकी होती है? दिस इज एयर। एंड +1000 HU किसकी होती है? दिस इज कॉर्टिकल बोन। 0 is water, -100 is fat. Next question. A 4-year-old child presents to the ER with breathlessness and pale appearance. No history of fever, vomiting, or diarrhea. X-rays shown. What is the following object? What is the object that the baby has swallowed? So he or she has breathlessness and pale appearance. मतलब एस्फिक्सिया हो रहा है उसको। तो क्या फंस गया यहाँ पे? You see that there is a double ring sign. एक बाहर की रिंग है और एक अंदर की रिंग है. And on lateral you see a beveled edge.
सो दिस इज टिपिकल ऑफ अ बटन बैटरी। ठीक है, एम्स में पूछा गया था रिसेंटली, दिस इज अ बटन बैटरी, या डबल है, डबल रिंग है, दिस इज अ बटन बैटरी। कॉइन होता है, कॉइन इज होमोजीनस, सिंगल रिंग। बॉल फ्लैट नहीं होगा, एपी दोनों में राउंड दिखेगा बॉल। एंड बॉटल कैप अगेन एपी और उसमें बॉटल कैप की थोड़ी थिकनेस ज़्यादा होगी, बॉटल कैप अगर होगा तो इतना बड़ा होगा। So this is typically a button battery and not a coin. Coin will be homogeneous. A button battery has double ring. Next question. And this is the last question. The MRI image is shown, which is eye of tiger. ठीक है, अगर MRI नहीं भी दे रखा होता, you could have guessed the name of the sign. This is the eye of tiger sign. What is the diagnosis? So you typically read Haller-Warden sparse disease, and इसका official name is PCAN और पैंटोथिनेट काइनेज एसोसिएटेड न्यूरोडिजनरेशन। ठीक है, सो आई ऑफ टाइगर साइन इज सीन इन पीकैन और हैलोवर्डन स्पार्स डिसीज। So that is all for today. That is all for this session, a PYQ session. We have covered PYQs from May 2021 till November 2024. ठीक है, so I hope you got a gist of what are important topics in radiology, and the main aim of this session was to cover all important PYQ for the last 5 years, right? So if there are any more questions, प्लीज टेल मी। इज रेडियोलॉजी हेक्टिक, एक टाइटन जितनी सैलरी मिलेगी क्या? टाइटन, टाइटन का मतलब क्या है? थैंक यू ऋषभ सर, सच अ ग्रेट सेशन। थैंक यू नेल्सन, थैंक यू सो मच। For now, less than a month is left for INI-CT, and a lot of you, I think, have already given NEET PG. So please do give INI-CT a serious attempt. जो आपने पढ़ रखा है बस उसी को दोबारा एक बार पढ़ना है। टेस्ट देते रहो, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट, रिवाइज retrogradely with the help of test. We'll also come up with an INI-CT marathon starting from 1st November, and that will help you revise all 19 subjects very quickly. यार टाइटन का क्या मतलब है? ओम, बॉटल कैप यूजली प्लास्टिक ही होती है। और प्लास्टिक में कभी कभी दिख भी जाती है यार प्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक में कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच मेक इट रेडियो ओपेक, यूजली नहीं दिखती है। बट अगेन एपी में राउंड होगी, लैटरल में थोड़ी मोटी होगी, इट वॉज वेरी very flat. This is a typical either a coin or a button battery. The giveaway was a double ring on AP and a beveled edges on lateral radiograph. Yes, Karthike, you should give INI-CT. In fact, lot of overlapping questions now happen in AIMS, INI-CT, FMG, NEET PG. So definitely you should give INI-CT if you're eligible. इफ रियोलॉजी हेक्टिक इस एक IITN जितनी सैलरी मिलेगी क्या? IITN की सैलरी तो बहुत वेरी करती है यार, रेंजिंग फ्रॉम 15 lakhs टू 1 CR। 1 CR तो नहीं मिलेगा यार एकदम से रेडियो में, बट येस यू विल गेट अ पोस्ट 1 year of SRship, you will get around 3.5 to 4 lakhs in metro, right? And पेरिफेरी में जाओगे, लेट्स से टायर 3 cities में, you still get around 6 to 7 lakhs per month। इतने तो मिल जाएगी आपको, which is not less, pretty good। फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट मिनिमम 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ तो एकदम से नहीं मिलेगी यार, थोड़ा टाइम लगेगा 1 करोड़ सैलरी लेने में। सर 3 giveaway points for last 1 month, हाउ टू रिवाइज ऑल सब्जेक्ट्स, आई हैव 19K रैंक इन नीट पीजी। यार देखो, लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी यही है कि आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। लास्ट 1 मंथ में फर्स्ट सेकेंड ईयर ओबीजी सर्जरी एफएमटी ये एकदम पक्के होने चाहिए। दे शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? इन सब्जेक्ट्स में लेस देन 2 क्वेश्चंस, 2 और लेस देन 2, दीज सब्जेक्ट्स में लेस देन और इक्वल टू 2 क्वेश्चंस रॉन्ग होने चाहिए बस। इतना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया ना कि एनाट फिजियो बायोकेम फार्मा पैथ माइक्रो
FMT, OBG, सर्जरी, 9 सब्जेक्ट्स में आपके 2 ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब 18 क्वेश्चन ही गलत हैं आपके। तो आपकी ऑलरेडी 150 के ऊपर स्कोर चला जाएगा, ठीक है, 140 या 150 के ऊपर चला जाएगा स्कोर, एंड दैट विल गेट यूर टॉप 2500 रैंक इन INICT, विच इज़ अ गुड रैंक बाय द वे, मिल जाता है 2000 रैंक पर भी एम्स में। तो ये 9 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने, इनके बिना नहीं होगा INI में सिलेक्शन। FMG में कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन रेशो, यार अब कट कॉपी पेस्ट तो इन जनरल बहुत कम हो गए हैं, बट स्टिल देर आर सम क्वेश्चन विच आर एग्जैक्ट रिपीट, सो अराउंड आई वुड से 20% ही कट कॉपी पेस्ट रिपीट होते हैं, बट टॉपिक सेम ही रहते हैं। सो यू नो अ लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव दिस चैंटिंग सेशन, जिसमें सारे 19 सब्जेक्ट्स कोई फैकल्टी बस चैंट कर रहा होता है, उसकी भी स्ट्राइक रेट भाई, मतलब 300 में से 100 क्वेश्चन तो वहीं से आ जाते हैं, ठीक है। तो 33% तो PYTs की है ही स्ट्राइक रेट, PYQs की, सॉरी। Yes, that is okay, Chaitanya. You have started late. That is okay. I think a lot of students have started late because the counseling has still not started, and they are sort of thinking कि भाई अभी तक काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हुई, INI के लिए पढ़ लेते हैं। बट बिलीव मी, अभी भी पढ़ लोगे ना, अक्टूबर में ही अच्छे से पढ़ लोगे, अभी भी 15 डेज आर लेफ्ट इन अक्टूबर, आपका तब भी काफ़ी सिलेबस कवर हो जाएगा। ये 9 सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए हैं, दीज 9 सब्जेक्ट्स आर टू बी रेड विद वेरी वेरी फोकस, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन नहीं गलत करने हैं आपको, OBG, सर्जरी, FMT, एनएट, फिजियो, बायोकेम, पैथ, माइक्रो, फार्मा। 2K rank clinical city names? Yes, 2K rank clinical city names. Yes, I will also come for only FMG PYQ session also. Around December में होगा only FMG PYQ session, तब I'll come. We'll have that session also. ठीक है, so thank you so much for joining in. It was indeed a wonderful session. Thank you so much for replying to my questions.